Hello everyone. Today we are solving exercise 7.1. In the first question we have find the area of the region bounded by the following curves, the x-axis and the given lines. So हमारे पास curve है, हमारे पास lines है और x-axis के बीच में जो area होगा उसको हमें ढूंढना है. Now this is the first time we are seeing something of this sort. Y is equal to x raised to 4. अभी यूजुअली हमने ऐसा तो कुछ देखा नहीं है एग्जाम्पल्स में. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 का शेप लगभग सिमिलर ही होता है. थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट बहुत थोड़ा सा. सो इट इज वेरी सिमिलर एंड वी हैव टू ड्रॉ इट एग्जैक्टली हाउ वी वर ड्रॉइंग y is equal to x square, just that we will use the points given over here. So first thing is, let us draw these two lines. X is equal to 1 and x is equal to 5. So for x is equal to 1, our line is going to be parallel to the y-axis. And for x is equal to 5, our line will again be parallel to the y-axis. Okay. Now we have to draw y is equal to x raised to 4. When x is equal to 1, तब y is also equal to 1. When x is 0, तब y is also 0. तो यहाँ पे तो 1 है. उसके बाद when x is 2, तब ये क्या हो जाएगा? It will become 16. तो ये ज़्यादा फटाफट इंक्रीज होगा लेकिन शेप सिमिलर होगा. जब x is equal to 5, तब तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा. So what we'll do is, because ये x raised to 5 is going to be a very big number और ये फिट तो नहीं होगा, even though ये रफ डायग्राम है फिर भी, तो हम लोग 1 थोड़ा और नीचे ले लेते हैं and we'll just draw rough diagrams. It will be the same shape like we had for x square. Okay? दूसरी साइड पे भी ऐसा ही होगा. अभी यहाँ पे we have to find the area of this region which is between these two lines and above the x-axis. Okay. Now this region का area ढूंढने के लिए we will have to integrate it from 1 to 5 इस function को. ठीक है. So therefore the required area is equal to integration from 1 to 5. y का value क्या है? It is x raised to 4 dx. Okay. So this is equal to x raised to 5 divided by 5 from 1 to 5. So therefore we get that this is equal to 5 raised to 5 minus 1 divided by 5. So now 5 raised to 5 कैसे निकालेंगे? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है. 25 का स्क्वायर 625. 5 raised to 5 is 625 into 5. मतलब this will be equal to 3125. 3125 minus 1 divided by 5, which is equal to 3124 divided by 5. Okay. So this is the value for this area. Okay. Now let us do the second question. Now in the second part we have that y is equal to 6x plus 4, x is equal to 0 and x is equal to 2. पहले तो x is equal to 0 मतलब क्या? It is the y axis. ठीक है. and x is equal to 2 मतलब यहाँ पे we'll take 2. Fine. Now इसके बाद we have to draw these straight lines. ये वाला line तो already drawn है, बस ये वाला ही draw करना है हमें. Now after this we have to plot this. Now what does this look like? हमने कभी स्क्वायर रूट वाला नहीं देखा है. ये एक्चुअली एक पैराबोला है. अगर क्योंकि मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 4. तो ये तो पैराबोला है ना, जहाँ पे एक स्क्वायर है, एक लीनियर है एंड ये x के आजू बाजू लीनियर है. सो इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट द x एक्सिस. ऐसा कुछ शेप रहेगा. ठीक है. नॉट नेसेसरीली एक्स एक्सिस क्योंकि ये +4 भी है, बट उसी के ऐसा ही शेप का होगा. सपोज नाउ आई पुट x इज इक्वल टू 0.
then I get that y square is equal to 4. So that means that y is equal to plus minus 2. तो जब x 0 है तब y का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रहा है. सो इट पासिस थ्रू दिस पॉइंट. ओके, दीज 2 पॉइंट से ये पास हो रहा है. नाउ नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 2 तब क्या होता है? तब दिस इज 12 प्लस 4 विच इज 16. तो तभी y का वैल्यू इज प्लस माइनस 4. सो इधर लेट्स से -4 एंड यहाँ पे +4. तो दैट विल बी इंटरसेक्टिंग हियर. ओके, सो देन बेसिकली ये पॉइंट और ये पॉइंट से पास हो रहा है. कहीं पे इधर तो उसका वर्टेक्स भी होना चाहिए. ठीक है, तो उसका वर्टेक्स ढूंढने के लिए बेसिकली हमें ये ढूंढना है कि y का वैल्यू 0 कब होता है. तो अगर मैंने y को 0 डाला देन आई गेट दैट x इज इक्वल टू, तो 6x इज इक्वल टू -4. सो x इज इक्वल टू -2/3. कहीं पे इधर तो वो 0 हो रहा है. एनीवे, if I join this here also, okay, and we'll just say that this is -2/3. Fine. So this is the drawing of the curve. Now they have given only positive square root. मतलब नीचे वाला इग्नोर करना है. ठीक है, जब हम y square is equal to 6x plus 4 करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट लेते ना, स्क्वायर रूट ऑफ 6x plus 4, तो ये ऊपर वाला आता है, नेगेटिव वाला नीचे आता है. सो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट ऊपर वाला, एंड उसमें भी बिटवीन दीज 2 लाइन्स. मतलब इट इज ओनली दिस रीजन. Okay, so we have to find the area of this region. To find the area of this region, we have to integrate from 0 से लेके 2 the value for y, which is already given ऐसे अलग से. ठीक है, so required area is equal to integration from 0 to 2 square root of 6x plus 4 dx. So this is going to be the same as integration of square root of x, just that this is of the form ax plus b. So end में we will have to divide by 6. So this is equal to 6x plus 4 raised to 3/2 divided by 3/2 from 0 to 2. फिर उसके बाद this becomes 2/3. दिस इज 12 प्लस 4 मतलब 16 रेज टू 3/2 माइनस, जब 0 डालते तब 4 होगा, तो विल बी 4 रेज टू 3/2. ठीक है, नाउ इसके बाद 16 का पहले स्क्वायर रूट ले लो तो 4 आता है. ठीक है, व्हेन आई से 3/2 मतलब क्या, पहले स्क्वायर रूट और फिर क्यूब. तो यहाँ पे इट विल बिकम 4, फिर 4 का क्यूब इज 64, एंड व्हेन आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ 4 देन आई गेट 2, एंड फिर 2 का क्यूब इज 8. So it is 64 minus 8. This is equal to 2/3 into 56. Okay, and we cannot cancel anything further. So therefore we get that our answer is equal to 112 divided by 3 square units. So I have made a mistake. I had mentioned right that we have to divide by 6, और फिर मैंने वो किया नहीं. तो वो 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी 6 होना चाहिए, यहाँ पे भी 6, and over here also we should have a 6. Okay, and because of this we can cancel out. So it gets cancelled and this becomes 9 in the denominator. So basically our answer is not 112/3. It is 56/9 square units. That is our final answer. Okay, now let's do the next question. In the third question we have that y is equal to 16 minus x square, x is equal to 0 and x is equal to 4. पहले तो x is equal to 0 मतलब the y axis, x is equal to 4 को हमें प्लॉट करना पड़ेगा. लेट्स से वो इधर है. ठीक है, so then we have to make a straight line that is parallel to the y-axis. Okay, so this is our straight line. Now इसके बाद we have to plot this curve.
Now first what I do is I square, so I get y square is equal to 16 minus x square. यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है तो ये पैराबोला नहीं है, इसको दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल अबाउट द ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और उसका रेडियस क्या होगा 16 का स्क्वायर रूट, मतलब इट विल बी 4. तो 4 ऐसा एक सर्कल रहेगा इससे ही पास होते हुए, बट क्योंकि सिर्फ y का पॉजिटिव वैल्यू दिया है तो वो नीचे वाले पार्ट में नहीं होगा. दिस कर्व इज ड्रॉन ओनली इन द ऊपर वाला पार्ट ऑफ द प्लेन, उसके ऊपर इन लोग इसमें भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली इट इज ओनली इतना ही हमें ढूंढना और फिर उसका ही एरिया निकालना है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक y इज इक्वल टू 4 कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक सर्कल बनाने के लिए, एंड फिर उसका एरिया हम ढूंढ के वी विल फिनिश दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज सपोज आवर सर्कल एंड नाउ वी वांट टू फाइंड दिस एरिया. ओके, सो हियर वी विल हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4 एंड y का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है. Now the formula for these kind of questions was given in the solved example. Fourth solved example में दिया हुआ था. I will write down the formula and then we will use it. Okay. So the formula is actually that integration of square root of a square minus x square is equal to x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 sine inverse of x by a. Okay, and then let us see on substituting हमें यहाँ पे sine inverse के बदले क्या आता है, but we know that sine inverse of 1 ये भी दिया हुआ था already is equal to pi by 2 and sine inverse of 0 is equal to 0. This is given in the fourth solved example in the textbook. Okay, so let us now integrate using this formula. So this becomes 4 square minus x square, right? 16 is 4 square minus x square. तो जहां पे भी a है वहां पे होना चाहिए 4. तो therefore इसका आंसर is equal to x by 2 square root of 16 minus x square ऐसे ही रहता है plus 16 by 2 sine inverse of x by 4, and this we have to integrate from 0 till 4 which is equal to, पहले अगर इसमें 4 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा 16 minus 16, यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो we'll get 8 sine inverse of 1 minus, जब 0 डालते हैं तब ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे से sine inverse of 0 मिलेगा फिर. Okay, so now let us write the value for sine inverse of 1, that is pi by 2 minus sine inverse of 0 तो 0 है, so this is just 0. So therefore our answer is 4 pi square units. So this is solvable only if this formula is given to you. Okay. In the fourth part, we have that 2y is equal to 5x plus 7, x is equal to 2 and x is equal to 8. So x is equal to 2 and x is equal to 8 are basically going to be straight lines that are parallel to the y-axis. Okay, so then let us draw that first. Now next we have to plot this line 2y is equal to 5x plus 7. Now for this हम लोग क्या करेंगे, हम x का वैल्यू यही लेंगे. ठीक है, when I put x is equal to 2 then I get that 2y is equal to 17, so therefore y is equal to 8.5. तो मैं अज्यूम करती हूँ कि 8.5 इधर किधर है. ठीक है, एंड फिर नेक्स्ट व्हेन x is equal to 8 तो ये 47 हो जाएगा. 47 by 2 मतलब 23.5 होगा. तो आई एम अज्यूमिंग कि इधर किधर है,
तो ये ऐसा कुछ होगा. So we'll just join this so we get the line. Now once we have drawn this, we have to find the area over here. Okay, so therefore the required area is equal to integration from 2 to 8 of this y. Y के लिए I will just have to divide by 2. So 5x by 2 plus 7 by 2 dx. Okay, so now this becomes 5x square by 4 plus 7 by 2x from 2 to 8. Okay, so then this is equal to 5 by 4 into 64 plus 7 by 2 into 8 minus 5 by 4 into 4 minus 7 by 2 into 2, which is equal to so this is 12 और 28 माइनस 12 करेंगे तो 16 आएगा और फिर 16 प्लस 80 करेंगे तो 96. So our answer is 96 square units. Now let's do the next question. In the fifth part we have that 2y plus x is equal to 8, x is equal to 2 and x is equal to 4, and we have to find the area between these lines. All three are lines only. पहले हम x is equal to 2 प्लॉट करेंगे तो इधर आएगा और फिर इसका डबल डिस्टेंस पे x is equal to 4 मिलेगा. Okay, so these are straight lines which are parallel to the y axis. Now after doing this, we have to plot 2y plus x is equal to 8. जब x का वैल्यू 2 है तभी we get that 2y is equal to 6 and therefore y is equal to 3. So here suppose 3 है, then the point is here. When I put x is equal to 4, तभी I get that 2y is equal to 4. So therefore y is equal to 2. इससे कम आएगा, right? और फिर इन दोनों को ज्वाइन करके we'll get the other straight line. Now we have to find the area between these two lines and the x-axis and therefore हम लोग ये area ढूंढने की बात कर रहे हैं. Okay, so therefore the required area is equal to integration from 2 to 4 सिर्फ y आना चाहिए. So it will be 8 minus x divided by 2 dx, which is equal to 4 into x minus x square by 4. This is from 2 to 4. On substituting 4, we get that this is 16 minus 4 square divided by 4 is 4. Minus जब 2 डालेंगे तब we get 8 minus this is 4 by 4, so ये 1 होगा. Okay, so this is equal to 12 minus 8 plus 1, which is equal to 4 plus 1, that is 5 square units. And that is our final answer. Now in the next part we have that y is equal to x square plus 1, x is equal to 0 and x is equal to 3. Okay, so x is equal to 0 is a y-axis, x is equal to 3 is a line that is parallel to the y-axis. तो on drawing this उसके बाद हम लोग को क्या बस बनाना पड़ेगा? We will only have to draw the parabola that is given over here. This parabola is linear in y, तो it will be symmetric about the y-axis. ऐसा shape होगा. But let's see whether it passes through the origin or no. So if I put x is equal to 0 इसमें, then y का value 1 आता है. So it is थोड़ा ऊपर, ठीक है? Then if I put x is equal to 3,
तो फिर y का वैल्यू 10 आता है, something here. Okay, so shape will be like this. So on drawing the parabola we get this. Fine. So now we want to find the area that is here. इसको थोड़ा नीटली शेड करने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा. इफ यू कैन ड्रॉ इट यूजिंग अ स्केल दैट वुड बी गुड. All these diagrams should also always be made with pencil only. I'm making it with pen so that it is clearly visible in the video. And it is a rough diagram. फिर भी उसको जितना नीट बना सकते हो उतना अच्छा है. So now to find the area, we have to integrate from 0 to 3 and this function. Okay. So the required area is equal to integration of y, which is equal to x square plus 1 from 0 to 3. Okay, so now this is equal to x cube by 3 plus x, and we have to substitute 0 and 3 over here. So then this becomes 27 divided by 3 plus 3 minus 0. Okay, so 27 divided by 3 is equal to 9. 9 plus 3 is equal to 12. So the answer is 12 square units. Okay, that is the area of the shaded region. In this part we have a parabola again, which is going to be symmetric about y, actually minus y axis. We have x is minus 1 and x is 1. X is minus 1 will be on this side and x is 1 will be on this side. Okay, and they will be straight lines that are parallel to the y axis. Now let us draw the parabola. When x is equal to minus 1, then y is also equal to 1. So that is, if y is here, then so this is the point on the parabola. If x is 1, then also y is 1. So this is also point on the parabola. Now next, if x is equal to 0, then in that case y is equal to 2. If x is equal to plus minus root 2, that is when ये 2 हो जाएगा तो वो 0 होएगा. तो यहाँ पे जब होगा तब वो 0 होगा. तो पैराबोला का शेप ऐसा कुछ होगा. Okay, this is, let's say, minus root 2 and this is root 2. Okay, we are supposed to find the area between these two lines is parabola and the x-axis. So basically we have to find this area. Now this is going to be symmetric on both sides. Okay, so even if we find 1, then this is more than enough. Or another thing also you can do is integrate from minus 1 to 1. That is also fine. So the required area is equal to integration from minus 1 to 1. Okay, and we have to write down the value for y, which is 2 minus x square dx. This is equal to 2x minus x cube by 3 from minus 1 to 1. On substituting 1, we get 2 minus 1 by 3. On substituting minus 1, we get minus 2 plus 1 by 3. Okay. On opening this, we have 2 minus minus 2, which is 4. And then we have minus 2 by 3. So this is equal to 10 by 3 square units. Okay. And that is our answer. Find the area of the region bounded by the parabola y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. X is equal to 3 is basically going to be a line that is parallel to the y-axis, okay, at a distance 3. So it is this line. Okay, and now we have to draw this parabola. So when x is 0, the y is also 0. When x is equal to 1, तभी y is equal to plus minus 2 because y square आ रहा है 4. So it will be somewhere here, but what I would suggest is let's put x is equal to 3.
जब x को 3 डालते तब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड दैट मीन्स दिस इज प्लस माइनस 2√3. सो समवॉट यहाँ पे वी कैन कंसिडर कि ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब 2 डालते तब 8 आता तो 2√2, तो ऐसा कुछ आता. तो बेसिकली वी हैव दिस पैराबोला. Okay, and now we want to find the area over here. So basically we want to find the area that is denoted by this shaded region. Okay, so to find this area, what we will do is we will do 2 times of the area that is upper. So for that I will have to do required area is equal to 2 times of integration from 0 to 3. ठीक है, then y is equal to square root of 4x. so I write that as 2√x. ऊपर है तो पॉजिटिव होगा एंड दैट्स इट, राइट. सो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट x raised to 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 3. दिस इज इक्वल टू 8/3 3 raised to 3/2 minus 0, which is equal to, now this is going to be equal to 8/3 into √3 का क्यूब. Now √3 का क्यूब मतलब क्या, √3 into √3 into √3. √3 into √3 is 3, तो ये कैंसिल हो जाता है and we are left with just 8√3 square units. Okay, and that is the area of this shaded region. Let us look at the next question now. In the next question, we are supposed to find the area of the circle x square plus y square is equal to 25. We already know कि इस circle का area होने वाला है pi into 5 square which is 25. तो it is going to be 25 pi बराबर, क्योंकि r that is 5 is the radius. Now पहले तो इसको draw करते हैं लेकिन. So if this is the origin, this has to be 5, 5, 5 and 5, and we have to join all these to make a circle. Okay, and now what we have to do is we have to find the area of the circle. What we do is we find the area of this region 1/4. Okay, and then उसको हम 4 से multiply करते हैं. So area of the circle is equal to 4 times the area from 0 to 5 of y. अभी y का वैल्यू क्या होगा, it will be square root of 25 minus x square. I took x square on the other side and then I took a square root. Now इसका फॉर्मूला हम लोग सॉल्व्ड एग्जाम्पल में देख चुके हैं. x/2 square root of 25 minus x square plus a square by 2, then we have sine inverse of x by a, and here a is equal to 5. This has to be done from 0 to 5. This is equal to 4/2. जब मैं 5 डालती हूँ तब ये 0 हो जाता है, जब मैं इधर 5 डालती हूँ तब I have 25 divided by 2 sine inverse of 1. Okay, minus, now when I put 0 this becomes 0 and here I have 25/2 sine inverse of 0. Okay, basically if you are confused कि sine inverse क्या है, तो तुम लोगों ने 10th standard में पढ़ा होगा sine and cos and all of that. तो हम यूजुअली बोलते हैं, you know that sine 30 is equal to half, ऐसे बोलते हैं ना. तो आई विल से एक्चुअली दैट साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज इक्वल टू 30. मतलब हम लोग बोलते हैं कि कौन से एंगल के लिए इसका आंसर इज इक्वल टू हाफ, वैसे. ठीक है, इसको हम रेडियंस में एक्चुअली लिखते हैं विच इज अ डिफरेंट मेजरिंग सिस्टम फॉर एंगल्स इंस्टेड ऑफ डिग्रीज. तो इसलिए इसका आंसर π/2 हम लोगों ने लिखा था पहले भी. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस दिस इज 0. तो आई हैव रिटन दिस 2 एक्स्ट्रा एक्चुअली इधर, तो इधर ये कैंसिल हो जाता है एंड वी फाइनली गेट जस्ट 25 pi square units, which was anyway the expected answer for the area of a circle. Okay,
Now let us solve the last question of this exercise. Find the area of the ellipse x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1. So x square by 4 है तो -2 and +2 and y square by 25 है मतलब we will have to look for -5 and 5. Okay, so then on joining this we get the ellipse. Okay, this is -2, this is 2 and this is 5 and -5. We have to find the area of this ellipse. We know actually already the area of the ellipse is equal to pi AB. So the answer has to be pi into 2 into 5. So the answer should be 10 pi. Okay. But we have to show the calculations. So for that we say that the area of the ellipse is equal to 4 times this shaded region का area. So this is equal to 0 से 2 में एंड हम लोग को y का वैल्यू निकालना है. इधर y को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी कैन से दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4. इसका एलसीएम लेंगे तो वी गेट 25 बाई 4 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट वी बेसिकली गेट दैट दिस इज 5 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. Again same formula apply करेंगे of a square minus x square that we just did and we get that this is equal to x by 2 square root of 4 minus x square plus 4 by 2 sine inverse of x by 2. Okay, from 0 से लेके 2 तक. When I substitute 2 over here I get 0, over here I get sine inverse of 1 as usual. So then this is 2 sine inverse of 1. When I substitute 0 इधर तो 0 आ जाता है और यहाँ पे आता है 2 sine inverse of 0. So therefore over here we get that ये cancel होने पे 10 into 2 into pi by 2 minus 0. So this is just equal to 10 pi square units. And that is what the expected answer was. Okay. So with that we have solved the questions of this exercise. I hope you have understood all the concepts in this chapter.